Welcome students to my YouTube channel. Today we are going to study about our environment. This is the 15th chapter in your NCERT class 10. First of all, we will understand that what is ecosystem. As I have written here, that ecosystem is a community or group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment. It means that ecosystem is a group of organisms or a community formed by organisms who interact among themselves, and with their interaction with among themselves they also interact with the environment. So on the whole we can say the interaction between living things and its environment is known as ecosystem. We can again modify it, that is, it is the interaction between the living things plus the interaction between living things and its environment. As we all know that the environment which is around the living things is made up of temperature, sunlight, water, soil and many more other non-living things. So one of the criteria to divide ecosystem into two parts is by dividing it into abiotic and biotic. In abiotic, all the non-living components will come which will form the environment around the organism, like climate, temperature, humidity, soil, water, nutrition and many more. On the other hand, the interaction is done by the biotic components like animals, plants, microorganisms. It means living organisms. The ecosystem is of two types. Either it can be artificial or it can be natural. The term artificial itself says that if there is any man-made thing. So if any ecosystem which is made by man is known as artificial ecosystem like aquarium, cropland and gardens. While on the other hand, if the ecosystem is itself made by the nature, then it is known as natural ecosystem. This is the second type of ecosystem. The examples can be ocean, sea, desert or land which is on the earth, like in the land in the forest. So students, we have seen the definition of term ecosystem. This term was given by Tansley. Fine. And we have seen the components of ecosystem, biotic and abiotic. Okay? Now next is that we can divide ecosystem into two parts, that is artificial ecosystem and natural ecosystem. Now this ecosystem in which the interaction is done among animals and animals, what is the purpose? That the animals or the microorganisms or the plants do interaction among themselves? The reason is for the food chain. The food chain is the real reason for the interaction among the biotics. We will see first of all who are the biotics. The biotics can be producers. They are green plants who produce food for the others. Next is consumer. There are several types: primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Next is all the consumers, directly or indirectly, they depend on the producers. The life on the earth is made possible only due to the producers. The producers are consumed directly or indirectly by consumers, and when these consumers and producers die, they are again given back to the nature by the help of decomposers. Now, who are decomposers? Decomposers are the organisms who break complex organic organisms into simple inorganic substances which are added to the soil back again, soil or to the atmosphere back again. This is the definition of the decomposers. Now students, we will see that what is food chain. As we are able to see, a sequential process of one organism eating the other and itself being eaten by another in turn.
What is food chain? So if an organism has eaten a producer, for the time being think that if a consumer has eaten a producer, if a consumer has eaten a producer, now this consumer will be eaten by another consumer, or you can say decomposer. So if there is sequence of eating and being eaten up, so this sequence is known as food chain. For example, as I have drawn here a food chain of marine. Okay, so phytoplankton, that means the plants which are present inside the water, are eaten by zooplankton. That means they are the animals who eat phytoplanktons. They are eaten up by fish, and again you can see that fish has been eaten by crane. So you have seen that phytoplankton is eaten by zooplankton, and this zooplankton is eaten by fish, and this fish is eaten by the crane. So here you can see that there is a sequence of eating up and being eaten up by the other organisms. Fine, boys. Now we can see that there are some information which we have gathered from this food chain. What is that information? So see, the flow of the transfer of energy from one trophic level to the another trophic level is fixed. That means it goes in only in one directional. So in food chain, the flow of chemical energy, always remember what type of energy flows? Chemical energy flows. The flow of chemical energy is unidirectional. That means it goes only in one direction. It cannot goes back, है ना? Is it possible कि फिश अपना जो एनर्जी जो फाइटोप्लैंक्टन से लिया उसको फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन को वापस दे दे? ऐसा तो नहीं हो सकता है. ज़ूप्लैंक्टन कभी फाइटोप्लैंक्टन को वापस दे दे? ये भी नहीं हो सकता है. Fine. So we can see that the unidirectional transfer of chemical energy occurs. Next is that whenever there is transfer of energy, only and only 10% of energy is passed on, because rest of the 90% energy is being used up by the organism itself. जैसे कि मान लीजिए अगर इसने 10,000 किलो जूल एनर्जी इस फाइटोप्लैंक्टन ने बनाया है, तो वो जो है ज़ूप्लैंक्टन को सिर्फ 1000 ही किलो जूल दे पाएगा, है ना. बाकी ये क्या किया 90% एनर्जी का, तो आखिर इसको भी तो अपना लाइफ प्रोसेस करना है ना. अब इसको जितना भी मिला, मान लीजिए अभी आप हमारे हिसाब से 1000 किलो जूल मिला, तो 1000 किलो जूल में अगर इस ज़ूप्लैंक्टन को ये फिश खा लेता है, तो ज़ूप्लैंक्टन को कितना मिलेगा? 100 किलो जूल, है ना. तो आखिर इसने क्या किया 900 किलो जूल का, तो ये ज़ूप्लैंक्टन अपने लाइफ प्रोसेसेस में उसको खर्च कर दिया. तो अपने लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म 90% ऑफ द केमिकल एनर्जी यूटिलाइज कर लेता है, और सिर्फ 10% ही वो केमिकल एनर्जी पास ऑन करता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए. नेक्स्ट इज ओनली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल इज मेड इन वन फूड चेन. आप 3 से 4 ही ट्रॉफिक लेवल, मतलब कि फूड लेवल, ट्रॉफिक लेवल का मतलब फूड लेवल, आप 3 से 4 ही फूड लेवल बना सकते हैं किसी भी फूड चेन में, क्योंकि जो लास्ट वाला टॉप मोस्ट होगा वो आपका, उसके पास बहुत ही कम एनर्जी रहेगा. किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसको खाकर कोई भी खास एनर्जी नहीं मिलेगा. तो जब ऐसा होगा ही नहीं कि इसके ऊपर वाले को खास एनर्जी मिलेगा, तो उसकी पढ़ाई हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वाले के लिए बहुत कम बचेगा. ये हम लोग देखेंगे अभी तुरंत. ओके, सो आई हैव ड्रॉन हियर अ फूड चेन ऑफ एक्वाटिक, और मैंने यहाँ पर सब कुछ आप लोगों से डील किया है. तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक आपको मैंने एक्वाटिक फूड चेन डिस्क्राइब किया है. ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये प्रोड्यूसर है, और क्योंकि ये प्रोड्यूसर है तो ये सबसे पहले खाने का चीज़ किसी के लिए बनेगा, सो ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आएगा. और मैंने इसमें ये अपने तरफ से ये एज्यूम किया है कि इसके पास 1000 किलो जूल एनर्जी होगा, ठीक है. तो ये फाइटोप्लैंक्टन, ये प्रोड्यूसर, इसके लिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा. बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं कि अगर ये प्रोड्यूसर है तो ये सब कंज्यूमर आएगा, और ये पहला कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर मैं लिखूंगा, इसको आप भी लिखिएगा. तो क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसी को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल लिख देते हैं. प्राइमरी मतलब भी पहला, फर्स्ट मतलब भी पहला, तो बच्चे क्या करते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर को ही पहला लिख देते हैं. ये गलत हो जाता है हम लोगों से, ये गलती है, ठीक है. आपका प्रोड्यूसर होगा ग्रीन प्लांट्स, और प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर होगा. ये भले ही आप प्राइमरी कंज्यूमर इसको लिखिएगा, मगर ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएगा, क्योंकि आखिर ये फाइटोप्लैंक्टन तो खाना ही है किसी के लिए, तो ये पहला खाने का लेवल. ट्रॉफिक मतलब क्या होता है? फूड. तो ये पहला खाने का लेवल, ठीक है. तो इसी के लिए आप लोग जो है इसको लिखने से पहले ध्यान दीजिएगा. अब उसके बाद आप
10,000 जूल इसको मान करके चलिए, आप इसको 10,000 जूल मान कर चलिए। अब जैसे जैसे ऊपर रहेगा 10% एनर्जी पास करते जाइए। तो अकॉर्डिंग टू दिस फूड चेन, फाइटोप्लैंक्टन इज ईटन अप बाय, फाइटोप्लैंक्टन इज बीइंग ईटन बाय ज़ूप्लैंक्टन। तो ये 10,000 किलो जूल है, तो ये 1000 किलो जूल हो जाएगा। अब ज़ूप्लैंक्टन इज ईटन अप बाय फिश, तो इसके पास 1000 किलो जूल था, अब ये 100 किलो जूल हो जाएगा। नाउ फिश इज ईटन बाय क्रेन, नाउ अब ये क्रेन के पास जाएगा कितना, 100 का 10%, दैट इज 10 किलो जूल। तो इतने बड़े क्रेन को खाकर किसी को कितना परसेंट एनर्जी मिलेगा, फिर 1% मिलेगा ना, 10 का 10% 1% हो जाएगा। तो कौन क्यों खाएगा उसको, कोई नहीं खाएगा। तो इसी के लिए हम लोग 3 से 4 लेवल से ऊपर का हम लोग ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते हैं, क्योंकि 4 स्टेज के ट्रॉफिक लेवल के बाद उस एनिमल को खाकर कुछ एनर्जी ही किसी को नहीं मिलेगी, है ना। तो इसके लिए ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक सो दैट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।